First, read the question. We are starting the 2024 question paper, shift 2. Please read the question. Question number 61. Which type of damages were awarded in Bhim Singh versus State of Jammu and Kashmir case? So, which type of damages were awarded? Okay, now you know that थोड़ा सा technical है. When you talk about damage, what is damage? Damage का मतलब है loss. Loss, But damages, legally when damages का मतलब है compensation. loss, compensations. Damage का मतलब है loss. इधर damages का मतलब है compensation. ठीक है, अगर डैमेज हुआ तो डैमेजेस मिलते. If damage happens, then the damages will be given. So if it is without S, it is loss, and if it is with S, it is compensation. ठीक है. So and which case it is? Bhim Singh versus State of Jammu and Kashmir. So Bhim Singh versus State of Jammu and Kashmir. ये how many of you have started reading my material? It is a leading case law in the torts. It is a leading case law of torts. Please see the chat box. I'm writing everything in the chat. It is leading case of law of torts. What is a tort? Twisted Civil and wrong. crooked behavior. A civil wrong, a private wrong, civil wrong, a private wrong, characterized as crooked behavior. Crooked or twisted behavior. So what is a tort? Civil wrong, private wrong, or cooked behavior. Or crooked or it's a twisted behavior. ठीक है? Now, Twisted. now when it is crime against the society, it is called as public wrong. But is a crime, but an wrong against an individual is called a tort. Okay. Now there are two principles. There are two principles in torts. There are two principles in torts. One is injuria sine damno. Can you repeat that, sir? There are two principles in torts. One is injuria sine damno. Damnum. Injuria sine damnum. मतलब injury without legal injury without damage. Legal injury without damage. Legal injury without damage. अब लीडिंग केस लॉस जब बोल रहे थे देर आर टू केस लॉस. वन इज एशबी वर्सेस व्हाइट इंग्लिश and Bhim Singh case, which is Indian. Second principle is damno sine injuria. Damage without injury. Damage without injury. Leading case law, Gloucester Grammar School case.
So what is a tort? Civil wrong or private wrong. So what are the two principles of torts? Legal injury without damage, damage without injury. So what are the leading case laws of injury without damage? Injury without damage is Bhim Singh versus State of Jammu There are Kashmir and Ashby versus White. there are two case laws. One is the English case law and one is the Indian Indian. case law. What is the year of Ashby versus White? कब हुआ था Ashby versus White? पुराने स्टूडेंट्स नोट्स देख के बोलिए Ashby वर्सेस White का केस कब हुआ? एग्जाम में यही पूछ 1703. 1703. ठीक है, Ashby वर्सेस White 1703 पे हुआ था। और भीम सिंह का केस कब हुआ? भीम सिंह केस पढ़ाया नहीं पढ़ाया आप लोगों ने? नाइनटीन एटी फाइव भीम सिंह केस हैपन इन 1985। ठीक है, और ये जो प्रिंसिपल्स है आई एक्सप्लेन व्हाइल मैं जब आपको टॉर्ट्स पढ़ाता हूँ देन आई एक्सप्लेन यू द इन डिटेल। ठीक है, तो आपको दो प्रिंसिपल्स क्या क्या है टॉर्ट्स के? व्हाट आर द टू प्रिंसिपल्स ऑफ टॉर्ट्स? Injuria sine damnum, damnum sine injuria. टैनम सिनो इंजूरिया, ये तो आपका क्या बोलते हैं, यू नो दिस। अब व्हाट इज अ डैमेज? डैमेज का मतलब Loss, नुकसान. डैमेज का मतलब है लॉस, डैमेजेस का मतलब है compensation. कंपेंसेशन। टॉर्ट्स में एक चीज आप लिख लो उधर और अपना कंप्लीटली आप अपने जहन में फिक्स कर लो उसको। टॉर्ट्स में कंपेंसेशन विल बी गिवन और शall be given only on the proof of legal injury। कंपेंसेशन कब मिलता? If legal injury हुई तो तब मिलता. जब भी होना लीगल इंजरी, सिर्फ और सिर्फ लीगल इंजरी। अगर आप यही सेंटेंस थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड लीगल लैंग्वेज में लिखे तो क्या होते हैं? डैमेजेस shall be awarded only on the proof of violation of a legal right। अगर आप सिंपल अल्फाज में लिखे तो क्या बोलते हैं? कंपेंसेशन शैल बी गिवन ओनली ऑन द प्रूफ ऑफ लीगल इंजुरी। अगर आप वही चीज अगर आप सोफिस्टिकेटेड लीगल लैंग्वेज में लिखे तो क्या बोलेंगे? Damages shall be awarded only on the proof of violation of a legal right. वायलेशन ऑफ ए लीगल राइट। अब मैं दो केस बोला था, इंजूरिया सीने डैमनो। पहला केस क्या है? Legal injury without damage. लीगल इंजुरी विदाउट डैमेज। अब बहुत ही ध्यान से सुनिए, एक बार समझ गए तो समझ गए, फिर कभी नहीं समझे तो कभी नहीं समझते। अब जो एशबी है, पहला केस लॉ क्या था? व्हाट वाज फर्स्ट केस लॉ? Ashby versus White. एशबी कौन था? हु वाज एशबी? एशबी वाज ए वोटर। एशबी वाज ए वोटर। ठीक है, ही वाज गोइंग टू कास्ट हिज वोट। ठीक है, अब वो वोट डालने जा रहे, पुलिस डिटेन हिम। पुलिस
detained him, and he went to the court saying that giving vote is my legal right. Giving vote is my legal right. समझ में आ रहा? So who was Ashby? A voter. Ashby A was voter. a voter. ठीक है? A person. What he was going to do? He was going to He vote. went to He was going to vote. उसको डालने दिए वोट नहीं दिए? नहीं दिए. नहीं दिए. So इन्हें क्या करा? What did Ashby did? He went to court. He went to court claiming that I suffered damage. I suffered legal injury. Hence, I want compensation. I want damages. समझ में आ गया? Yes or no? Yes, sir. तो क्या है बोलिए अभी तक? क्या? Who was Ashby? He was a voter. Hmm. His voting right was क्या बोलते हैं? वोट डालने नहीं दिए. His voting right was violated. His voting right was violated. So he went to court. Went to court. What did he ask in the court? Ashby was a petitioner. What did the court? What did he ask in the court? What did he pray to the court? my right was violated and I need compensation because क्या था सर वो He said injury legally. he said he suffered legal injury. ठीक है? इधर तक समझ में आ गया? Yes sir. हाँ. अब he prayed, he filed the petition that he want compensation, damages. लेकिन the other side gave a reply saying that though he was unable to vote, but the party he was going to vote won the elections, so there was no damage. उसको नुकसान तो नहीं हुआ ना कुछ भी. समझ में आ रहा? जवाब क्या था? जवाब समझे नहीं समझे? What was the response by the respondents? Yes sir. रेस्पॉन्स क्या था? उसका जवाब में क्या दिया? क्या बोले वो लोग इसके पिटीशन के जवाब में? जो पार्टी को ना वोट करने जा रहे थे वो ऑलरेडी मतलब विन हो गई तो उनको डैमेज नहीं हुआ किसी भी तरीके से, ऐसे एक्सप्लेनेशन दिए. सो ऐसा रेस्पॉन्स दिए. देन द कोर्ट सेड इंजूरिया सीने डैमनम. कोर्ट क्या बताया? व्हाट द कोर्ट रिप्लाई वाज? इंजोरियस डैमनम. इंजूरिया मतलब इंजूरी. इंजूरी का मतलब क्या है? इंजूरी विदाउट डैमेज. वो नुकसान हुआ नहीं हुआ डज नॉट मैटर. क्या लीगल राइट वायलेट हुआ नहीं हुआ, द कोर्ट के पास एक ही चीज थी. इट डज नॉट मैटर वेदर देयर वाज डैमेज और नॉट, बट क्या लीगल राइट वायलेट हुआ नहीं हुआ? हुआ नहीं हुआ? आप लोग बोलो. हुआ सर. तो क्या केस हुआ केस सर. समझ में आया आपको? व्हाट वाज द केस? कैन यू समराइज द केस? देखिए दिस इज वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स केस. मैं आपको सिंपल अल्फाज में समझा रहा हूँ. केस Yes. क्या है? Ashby is a voter who is going to cast his vote, but the police detained him before casting the vote. So Ashby approached the court claiming that he suffered the legal injury and demanded the damages for violating the right. But the ओके. reply of the other party was that though he was going to vote for that party, the same party won, so it is the legal injury without damage. ओके. सो व्हाट इज द कोर्ट सेड? Injuria sine damam. मतलब Legal injury without damage.
The court said, irrespective whether the damage has been done or not, whether did you violate the his legal right or not, लीगल राइट वायलेट हुआ नहीं हुआ, Yes. अगर वायलेट हुआ तो डैमेजेस विल बी अवॉर्डेड, वायलेट नहीं हुआ, लीगल राइट वायलेट नहीं हुआ तो डैमेजेस नहीं मिलते। समझ आ रहा? क्लियर है पॉइंट? ये तो क्या था, एशबी वर्सेस वाइट का केस था जो 1703 में हुआ था, लेकिन अपना अपने पास कौन सा केस है? इंडिया BMC का versus केस। state of Yes. Jammu and Kashmir. जैसा एशबी वाज अ वोटर, एशबी वाज ए वोटर, या भीम सिंह वाज एन एमएलए। भीम सिंह कौन था? MLA. He was an MLA. He was going to the assembly of J&K to participate in the debate and vote. Participate in the debate and vote. But same thing, as Ashby was detained before he casted his vote. Even the Bhim Singh was detained before he before he reached the assembly. ठीक है? So again, this Bhim Singh went to the Indian courts, saying that as an MLA, as a legislator, he has a legal right to participate in the voting. कुछ एक कानून पे वोट होने जा रहा था वो. He went to the court saying that I wanted to put my arguments, put my point of view, and I eventually wanted to vote in the voting, whether to pass the act or whether to fail the act. Then the same thing happened. What would be the response? State का response क्या था? The state said, though he was an MLA, the party he belonged won the votes. The party जो कानून पास करना चाह रही थी, whether the party was against the act or against the bill or in favor of the bill, that happened eventually. So they said there was no damage done. Then the court simply said, the precedent of Ashby versus White, the court said, irrespective of whether Bhim Singh was allowed, Bhim Singh wanted to cast his vote in a favor of the bill or against the bill, did you violate his legal right or not? क्या एमएलए के पास असेंबली में जाने का लीगल राइट था नहीं था? हाँ. क्या एमएलए को आर्ग्यूमेंट्स में क्या बोलते हैं, डिबेट में हिस्सा लेने का लीगल राइट था नहीं था? Did he सर has the डिटेन होने right? का रीजन नहीं बताते हैं सर. लेट्स से दे आर डिटेनिंग हिम, तो व्हाइल डिटेनिंग हिम रीजन बताते हैं. Irrespective of any reason, irrespective of any reason, जब आप एमएलए है तो आप रीजन बता के भी क्या करते? what would impact it would have done? आपको राइट, लीगल राइट से रोक दिए ना. जी. That's all. That's the first thing which we have that. ठीक है? ओके. So the court said, yes, no matter. It doesn't matter whether his party for which he was voting or against. It did not matter. Did the state violate the right or not? So yes, the state violated the right, and he was given the compensation. He was awarded the damages. समझ में आया? Clear है point? So cases आपको, अगर आप केस कैसा भी उठा फिरा के घुमा फिरा के देता हूं, भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रिलेटेड टू इंजुरिया सीने डैमनम और डैमनम सीने इंजुरिया, या बोथ और नन, कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे आप? इंजूरिया साइन डेमनम. इंजुरिया सीने डैम. ठीक है, समझ में आ गया? ओके. ये कहानी समझाना, बैकग्राउंड देने का मकसद आपको, इसको क्या बोलते हैं, कौन सा भी क्वेश्चन आ जाओ इस पे कर सकना. क्वेश्चन बहुत आसान है. ये भीम सिंह वर्सेस जम्मू एंड कश्मीर में डैमेजेस अवार्ड करे थे कोर्ट, बट क्यों, ये पूरी कहानी समझा रहा आपको. ठीक है, क्लियर है पॉइंट? अभी भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जब जी
क्या डैमेजेस मिले थे सर? अरे कुछ पैसा मिला और क्या, मॉनेटरी कंपेंसेशन है वो। तो कौन से डैमेजेस मिले थे पूछ रहा हूँ, कौन से डैमेजेस मिले थे? Exemplary damages. Exemplary damages. एग्जेम्पलरी डैमेजेस का मतलब क्या है? प्यूनिटिव डैमेज, आपको सजा के तौर पे जब देते ना उसको बोलते हैं एग्जेम्पलरी डैमेजेस। समझ आ रहा? Punishment is जो सजा Sir, के, one देखिए पहला क्या है? नॉमिनल डैमेजेस। नॉमिनल डैमेजेस का मतलब compensation or nominal damage. मैं नाम, Money. फॉर 1 रुपी। Hmm. नॉमिनल मीन्स ओनली फॉर नेम सेक, वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट, वेरी स्मॉल अमाउंट। एग्जाम्पल ₹1। अब ये देके फायदा नहीं है, सिर्फ नेम सेक दे रहे बस होता ही। हाँ भाई तुम्हारा नुकसान हुआ ना, ठीक है, लो बोल के। सिर्फ इज्जत देने के वास्ते, और कुछ भी नहीं। या तो इज्जत निकालने के वास्ते या तो इज्जत देने के वास्ते। ठीक है, Hmm. सिंबॉलिक। नॉमिनल मीन्स ओनली सिंबॉलिक। सेकंड क्या है? व्हाट इज सेकंड? सेकंड अबाउट डैमेज, Contemptuous. Contemptuous damages. कॉन्टेम्पचुअस डैमेज, विच मीन्स tiny damages, only desiry. It is also known as derisory damages, also known as contemptuous, also known as desiry, derisory, derisory, derisory damages। मतलब देखिए, Derisory. नॉर्मली फैमिली केसेस में जो होता, फैमिली कोर्ट्स में, अब देखिए घर की बात घर में ही रखना बेहतर रहता, घर में ही सॉल्व कर लेना। लेकिन थोड़े केसेस क्या होते, थोड़े पार्टीज क्या करते, दे गो टू कोर्ट्स और खुद ही क्या बोलते हैं, इट इट वुडंट बी प्रॉपर। बट अब लॉ है तो कोर्ट्स अवॉर्ड वेरी टाइनी डैमेजेस, नाम के लिए डैमेज दे देते। हाँ भाई ठीक है, यू टेक द डैमेज, दैट्स ऑल। ठीक है, ऐसे डैमेजेस, ऐसे केसेस जहां इट वाज नॉट प्रॉपर टू ब्रिंग टू द कोर्ट। ठीक है, Hmm. समझा? So it is called as contemptuous damage, very tiny damages. Third, what is third? Exemplary damage का मतलब in the form of punishment, compensation in the form of punishment, उसको बोलते हैं exemplary damages। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? थर्ड क्या है, लास्ट वाला क्या है? specific damages. Specific damages other than monetary damage, other than monetary damage. For example, it's like कोई थोड़े ऐसे चीजें रहते हैं जिसकी मॉनेटरी वैल्यू कुछ भी नहीं रहती, बट उसकी इमोशनल वैल्यू वो ज्यादा रहती। Hmm. समझ रहा? फॉर एग्जाम्पल, कैन यू से एनी एग्जाम्पल? जैसा का वैसे देना आप, जो हुआ वही उसको रिप्लेस कर देना उस चीज को, या वैसा ही करके दे देना उसको बोलते हैं स्पेसिफिक डैमेजेस। इट वुडंट बी मॉनेटरी डैमेज बट इट वुड बी वेरी स्पेसिफिक, कि भाई जैसा था वैसा करके दे दो आप, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक। नॉन मॉनेटरी डैमेजेस आर कॉल्ड स्पेसिफिक डैमेजेस। ठीक है? Like accident नो in नो,
not accident, something which cannot be quantified in monetary value, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक डैमेज, जिसकी इमोशनल वैल्यू Cannot be ज्यादा रहेगी वो quantified. चीज। अब देखो Cannot be फोन है, quantified. cannot be quantified, like for फोन है छोटा, now it was Hmm. the phone was given to you by someone like your father, और उसका उसकी है वो छोटा वो चीज, आज की वैल्यू में Emotional feeling. इमोशनल चीजें अटैच रहते हैं उसको, यू से इसके पैसे नहीं होना, मेरे को वैसे रिपेयर करा के दे दो आप, दैट इज Hmm. कॉल्ड एज स्पेसिफिक डैमेज। ठीक है, Okay. समझ में आ गया? सो भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कौन से टॉट के प्रिंसिपल्स को अट्रैक्ट करता? Injuria sine danum. इंजूरिया Legal सिने, injury इंजूरिया sine सिने danum. डालना। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? Yes, sir. Sir, तो one doubt. जी सर एशबी वर्सेस वाइट में एशबी का वोटर लीगल राइट वायलेट हुआ बट द पार्टी हाँ, वन सो ओके, ही डिडंट गेट द कंपेंसेशन ही भीम गॉट द सिंह केस कंपेंसेशन, ओके वही तो है ना, आपका पार्टी वन हुआ या फेल हुआ डज नॉट मैटर। सर भीम सिंह गॉट द कंपेंसेशन नो वो एशबी आल्सो गॉट द बोथ एशबी को भी उधर कंपेंसेशन मिला, वही तो प्रेसिडेंट बना ना इसको। ओके ओके या आई वाज उसी बिट कंफ्यूज्ड उस हम्म उसी को ही आप एक केस लॉ बना के प्रेसिडेंट बना के भीम सिंह जीता उन्हें, ओके बिकॉज When exemplary damages का in the form of punishment, right? तो punishment पार्टी को मिलेगा, other side. माने जो अदर साइड है, जो भी जो टॉट है ना, एंड हु कमिट्स टॉट इज कॉल्ड एज टॉट फीजर। टॉट है, व्हाट इज अ टॉट? Hmm. इट्स अ ट्विस्टेड बिहेवियर। Wrong. हु Yes. कमिट्स Twisted. हु कमिट्स टॉट इज कॉल्ड टॉट फीजर, FESOR, means wrongdoer. Hmm. The punishment is allotted to, the punishment is given to the wrongdoer, saying that you have to pay this much to this much, you have to pay this much amount to the person who has been wronged। Hmm. जो Okay. पनिशमेंट, जो एग्जाम्पली डैमेजेस माने जो पैसा है, वो स्टेट क्या Yes. करती, गवर्नमेंट क्या Hmm. करती, इसको मिलता, इसको देती पैसा, Okay. उधर आजबी केस में और Okay. ये भीम सिंह केस Okay. Okay. Like for में। ठीक example, police detains him, but the case will be on the state government. है, गवर्नमेंट पुलिस क्यों डिटेन करी? Hmm. Hmm. On the action of or direction of the state government. जो डायरेक्शन है स्टेट गवर्नमेंट, तो डायरेक्शन ही देंगे ना, Correct. गवर्नमेंट ही Okay, देंगी sir. ना। Understood. ठीक है, Okay, सो sir. Understood. वी हैव 3 मिनट्स, 3 मिनट में ये सेशन खत्म होता, फिर से री लॉग इन कर लो आप, ठीक है? Okay. और ईच सेशन विल ऑफ 40 मिनट्स, 40 मिनट्स के बाद आप फ्रेश सेशन में ज्वाइन हो जाना, वही सेम लिंक, यूज द सेम लिंक। ठीक है, क्लियर है पॉइंट ये? Yes. Yes, sir. ओके, प्लीज रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। What happens in a conflict between state law and central law? अगर स्टेट लॉ है, सेंट्रल लॉ है, तो अगर दोनों भी Central law. एक ही सब्जेक्ट पे कानून बना है, तो कौन सा लॉ प्रिवेल होता? Central law का. Yes, sir. सेंट्रल लॉ प्रिवेल्स। ठीक है, इसकी स्टोरी मैं नेक्स्ट सेशन में बताता हूँ। अपना कितने शेड्यूल्स है अपने पास? How many schedules do 12 we have? schedules There 12. are 12 12 schedules। ठीक है, उसमें 7th शेड्यूल है, उसमें लिस्ट 1 है, यूनियन लिस्ट, लिस्ट 2 है, स्टेट state लिस्ट, list state list लिस्ट 3 है, concurrent list कॉनकरेंट लिस्ट। क्या बोलेंगे इसको? कॉनकरेंट लिस्ट। लिस्ट कॉनकरेंट लिस्ट का मतलब ये है, एंट्रीज ऑन विच
लिस्ट 3 में entries on which both central and state government can make laws. If two laws clashed, central government law will prevail. ठीक है. सो अगर कंफ्लिक्ट आ गया स्टेट लॉ और सेंट्रल लॉ के बीच में, तो कौन सा कौन सा लॉ प्रिवेल करता? Central law. सेंट्रल गवर्नमेंट माने सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ का मतलब क्या है? पार्लियामेंट मेड लॉ. क्या है? पार्लियामेंट मेड लॉ. तो सिंपल याद रखो, दोनों में क्लैश आ गया, कंफ्लिक्ट आ गया, तो कौन सा लॉ प्रिवेल करेगा? Central law. सेंट्रल लॉ. ठीक है. सर अगर सेंट्रल लॉ इन केस अगर कुछ भी अगर उसमें समझ में नहीं आया फिर कुछ भी जैसा किसी के भी सेंट्रल वोल्टेज लॉ विल प्रिवेल. सेंट्रल लॉ विल प्रिवेल. ठीक है. क्लियर है पॉइंट? Yes. Okay. सर Let us. Our session will end now. Please get into the next other side of the sea. कितने क्वेश्चंस कर लिए अपन?